Agenda for the day: go to Nepal. It's not something you'd often say. I wasn't sure what to expect on the other side. A completely different world, maybe? Well, practically was an extension of a market on this side. In another country, of course. I didn't plan to stay in Darchula. Instead, I wanted to ride all the way to Narayan Ashram to reach the destination, so to speak. I'm glad we waited for the next day. टनल के अंदर से आ रहा है ना पानी. What the hell? सामने से रोड दिख रहे हैं, पहाड़ से कटे हुए दिख रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? आइस वाटर ऐसा होता है क्या? I don't know why. Never found out. तो ये पुल छोड़ के लेफ्ट में कट रहे हैं हम नारायण आश्रम की तरफ. पानी रोक रखा है, मतलब उस तरफ रिजर्वायर होगा, है कि नहीं? वाव, वहाँ तक है रिजर्वायर. ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर से ऊपर निकला. आरती, जरा रोड देख एक बार. हाँ, एक ही रोड है, राइट जा रहा है. हाँ भाई, कॉन्फिडेंस तो. चल भाई, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. वाओ वाओ, आरती, दिस इज क्रेजी. लुक एट दैट रोड. कितना स्टीप असेंट है यार ये. कितना हाइट है. हम लोग वहीं थे अभी नीचे वाले रोड से. क्या है ये? दिस इज क्रेजी मैन. किसी ने बताया नहीं इसके बारे में यार. हमने सोचा भी कैसे कि हम लोग रात को कर लेंगे. That is the kind of ride that stay has been, but what a beautiful place. Wow, 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 wow. चलो आप जो है ना चाय लेके नाश्ता कंजोटी में कर लीजिए. कंजोटी, ओके. जो ब्रिज है ना, जो हाँ, जो ब्रिज जो आप देखा, जो इस तरफ नारायण आश्रम को मुड़ा वो वाला. जी, वही जो पुल है. हाँ, हाँ. पुल से आगे जाके जो भी खाना खाना है, पूरी पूरी भी बन जाता है सुबह वहाँ. अच्छा. कंजोटी से आपका 46 किलोमीटर है. मेरी रास्ता ऐसे ही होगा? इससे अच्छा. इससे अच्छा? बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ऊपर रहने की जगह है. लॉटरी लग गई तेरी तो. तू मेरी गोद में बैठा हुआ है. चलो जा. डब्बू, वो काट रहा है.
What a morning. क्या जगह है यार ये, मतलब 2700 meters. This is the highest point that we've been here in Uttarakhand. I think this ashram was established in 1934 by Shri Narayan Swami. So this is in his name. बहुत शांत जगह है. It's actually an ashram here. So रूल्स थोड़े अलग हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. जिस टोन में बात कर रहा हूँ उससे समझ आएगा कैसे टाइप का आश्रम है. शांति चाहिए. शाम को 6 से 7 आरती होती है, उसके बाद इमीडिएटली खाना 7-7:30 के आसपास. The road itself was very beautiful, but this place is beyond your imagination. People spend months in this ashram with barely any luxuries to speak of. Perhaps to break away from the routine and in the process maybe find something within themselves. We had our own little revelation, and in the most unexpected of places.